Hello everyone. Welcome back to Learning Himachal. Welcome back to the One Path. कैसे हैं आप लोग? How is your preparation going? So today's session is on disaster management. So without further ado, let's get started. Question number 1. With reference to the National Disaster Management Authority, NDMA, consider the following statements. Statement 1. It is a statutory body established under the Disaster Management Act 2005. The Prime Minister of India is its chairperson. Statement 3. Its function under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Which of the following statement given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, ऑप्शन डी 1, 2 and 3. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 and 2 only. क्यों? NDMA is a statutory body under the Disaster Management Act 2005. Prime Minister is the chairperson. ये आपकी statement 1, statement 2. Statement 3. It works under the Ministry of Home Affairs and not Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Done? Question number 2. Which of the following hazards are classified as biological disasters? Earthquake, pandemic influenza, dengue outbreak, tsunami. Select the correct answer using the code below. 1 and 4 only, 2 and 3 only, 2, 3, 4 only, 1, 2 and 3 only. तो इनमें से बायोलॉजिकल चीज कौन सी है? पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा एंड डेंगू आउटब्रेक. ऑप्शन बी 2 and 3. तो बाकी दो क्या हैं? बाकी दो आपके जियोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं एंड पेंडेमिक एंड वेक्टर बोर्न डिजीज क्या होती हैं? आपकी बायोलॉजिकल डिजास्टर्स. क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. डिजास्टर एंड अर्ली वार्निंग एजेंसीज. सुनामी, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, साइक्लोन, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, अर्थक्वेक, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली. जो अर्थक्वेक है वो GSI studies seismicity but does not provide real time early warnings for earthquake. seismicity को या earthquakes को ये स्टडी जरूर करता है बट अर्ली वार्निंग सिस्टम या अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. Question number 4. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 to 2030 focuses on binding commitments for climate-induced disasters, post-disaster reconstruction only, reducing disaster risk losses in lives, livelihoods and health, promoting military support in disaster zones. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. The Sendai framework emphasizes risk reduction and resilience, not just response. Question number 5. Which of the following are structural measures of disaster risk reduction? Flood embankments, early warning systems, cyclone shelters, education and awareness programs. Select the correct answer using the code below. 1, 2, 3 only, 1 and 3 only, 2 and 4 only, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली. जो स्ट्रक्चरल हैं वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे. तो इसमें 1 and 3 ऑप्शन थे. फर्स्ट वाज फ्लड एम्बैंकमेंट एंड साइक्लोन शेल्टर. थर्ड वन वाज साइक्लोन शेल्टर. तो ये क्या है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं. नॉन स्ट्रक्चरल में आपकी अवेयरनेस और अर्ली वार्निंग्स आती हैं. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. Question number 6. Which of the following protocols and conventions are directly relevant to disaster risk reduction and management? Basel Convention, it is regarding your hazardous wastes. ठीक है. Hyogo Framework, directly related to your disaster risk reduction. Kigali Amendment is related to your hydrofluorocarbons, chlorofluorocarbons, है ना. HFCs and Paris Agreement is related to climate change and climate related disasters. ठीक है, तो कौन सा यहाँ पूछा गया कौन सा relevant है to disasters, right? तो correct answer is 1, 2 and 4. Kigali Amendment is not that much relevant in case of disaster risk reduction. तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option 1, 2 and 4 only. Let's see. C option.
बेसल आपकी हजार्डस वेस्ट के रिलेटेड है, योगो आपका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है, पेरिस आपका क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर से के बारे में बात करता है, किगाली आपका HFCs के बारे में बात करता है, क्लाइमेट मिटिगेशन की बात करता है, डायरेक्टली जो है वो डिजास्टर के बारे में बात नहीं करता है। डन। क्वेश्चन 7 फॉर द डे इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। डिजास्टर का टाइप दिया है, हजार्ड की कैटेगरी दी है। फॉरेस्ट फायर हाइड्रो मेटेरोलॉजिकल, लैंडस्लाइड जो है वो जियोलॉजिकल है, ऑयल स्पिल जो है वो केमिकल या इंडस्ट्रियल है। Which of the above pairs are correctly matched? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या all of the above? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। फॉरेस्ट फायर जो है वो टिपिकली कैटेगराइज की जाती है बायोलॉजिकल या एनवायरमेंटल में, नॉट हाइड्रो मीटरोलॉजिकल में। ठीक है, डन। लेट्स मूव अहेड। Question number 8. Consider the following statements. The term disaster resilience is synonymous with disaster recovery. Statement 2. Resilience includes the ability to anticipate, absorb, adapt to, and recover from a hazard. Statement 3. Recovery focuses solely on infrastructure rebuilding. Which of the above is are correct? 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, या all of the above? देखो, जो स्टेटमेंट 1 है उसमें क्या बोला गया है, डिजास्टर रेजिलियंस जो है और डिजास्टर रिकवरी जो है वो वन एंड द सेम थिंग है। अगर ये बात सही है तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट, 1 और 2 साथ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि रेजिलियंस में क्या बोल रहा है, रेजिलियंस में ये बोल रहा है कि एबिलिटी टू एंटिसिपेट आती है, अब्जॉर्ब करना आता है, अडेप्ट करना आता है और रिकवर करना आता है। अगर रिकवर करना इसके अंडर आता है तो ये दोनों सेम चीजें नहीं हो सकती। तो ऑप्शन 1 एंड 2 साथ में तो करेक्ट नहीं हो रही, तो ए और डी एलिमिनेट हो रहा है। अच्छा, ऑप्शन 3 को देखते हैं। रिकवरी फोकसेस सोलली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। क्या जब डिजास्टर हो जाता है तो हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं क्या हम? तो ऑप्शन 3 भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी 2 ओनली। रेजिलियंस इज अ ब्रॉडर term than the recovery. Recovery isn't just infrastructure but also psychological, social and economic aspect. हर aspect को cover किया जाता है recovery में। ठीक है, let's move ahead. Second last question for the day is question 9. The Disaster Management Act 2005 allows for which of the following powers to be exercised by the central government in notified disasters? Statement 1. Suspend state laws and override state disaster management authorities. Statement 2. Issue binding directions to union ministries and state governments. Statement 3. Impose punishments for obstruction of disaster related operations. Select the correct answer using the code below. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। क्यों? क्योंकि द एक्ट डज नॉट सस्पेंड स्टेट लॉज बट allows central directions and enforcement powers under section 6 and 51. ठीक है, so last question for the day is question 10. Which of the following best explains the difference between a hazard and a disaster in context of disaster management? A hazard is always natural and a disaster is always man-made. Statement B. A hazard has no human loss, whereas a disaster always involves death. A hazard is a potential threat. A disaster is a realization of that threat with serious consequences. Option D. A disaster must always involve economic losses. Hazard may or may not. तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी. A hazard is a potential threat. A disaster is a realization of that threat with serious consequences. Option C. Hazard is a potential and disaster is actualized impact on human system. Done? Okay. So that's it for the day. अगर आप HPFS की प्रिपरेशन को A to Z एक्सटेंसिवली करना चाहते हो तो लर्निंग हिमाचल इज देयर टू हेल्प यू। एंड अगर आप अपनी प्रिपरेशन को का लेवल टेस्ट करना चाहते हो तो वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग मॉक टेस्ट फॉर यू। फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी you can contact our team, and if you directly want to join these initiatives you can check the description of this video. So keep studying, keep working hard. Thank you and have a nice day.